Hello my dear students, I welcome you to this class. In previous classes, we have already discussed about phrases, clauses and types of clauses. Last class, we discussed about the noun clauses and their function. Today, our topic is adjective or relative clauses. आजिर प्रसंग आम रिलेटिव क्लोज बा एडजेक्टिव क्लोज संपर्क में आम आलोचना करवा। तेणु आम नाउन क्लोज जानी सबनेट क्लोज हूँ तीन प्रकार। द फर्स्ट वन इज नाउन क्लोज और क्लोजेस, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोजेस, देन थर्ड वन इज एडवर्ब क्लोजेस। एंड टुडेज टीचिंग पॉइंट इज एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोजेस। आज वी नो दैट आम सब जानी जे क्लोज होउची एक वाक्य हो पारे, सरल वाक्य हो पारे किंबा गोटे दीर्घ वाक्यर एक अंश हो पारे, जो थे गोटे कर्तापद थी गोटे क्रियापद थी एवं ताको आम क्लोज बोली कही था। तेणु ये रिलेटिव क्लोज बा एडजेक्टिव क्लोज, तेणु तार संज्ञा कौन ना एडजेक्टिव क्लोज रिलेटिव क्लोज। देन an adjective clause is a group of words which contains a subject and a predicate and does the work of an adjective. That means it qualifies a noun or a pronoun in the main clause or principal clause. Generally, it is introduced with the words with the relative pronouns or adverbs like who, which, that, whom, whose and where, etc. तेणु आम एडजेक्टिव क्लोज द अदर नेम ऑफ रिलेटिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को आम रिलेटिव क्लोज बोली कही पारिबा, कारण एडजेक्टिव क्लोज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव क्लोज इज इक्विवेलेंट विथ द फंक्शन ऑफ रिलेटिव क्लोज। तेणु रिलेटिव क्लोज रो कार्य जहाँ एडजेक्टिव क्लोज रो कार्य मत ताहा। तेणु आम एडजेक्टिव क्लोज कहले जे an adjective clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective, that is, it qualifies a noun or a pronoun in the main clause. मेन क्लोज जो नाउन आंटेसेडेंट नाउन क्लोज आंटेसेडेंट नाउन फ्रेज बा आंटेसेडेंट नाउन वर्ड रही ताकू से क्वालिफाई करुचे और प्रिंसिपल क्लोज जनरली
it is generally the relative clause or adjective clause is introduced with the relative pronouns or relative adverbs like who, which, that, whom, whose and where. ये जो छोटी शब्द मु लिखिली ये छोटी शब्द भितर जेकोसी गोटे शब्द बा गोटे वार्ड जहाँ को कहुए रिलेटिव प्रोनाउंस बोली कहुए बा रिलेटिव एडवर्ब बोली कहुए तेणु ये भितर जेकोसी गोटे शब्दरू आरंभ होइथिबो रिलेटिव क्लॉज बा एडजेक्टिव क्लॉज तेणु हु, व्हिच, दैट, whom, whose and where केतोटी शब्द मु लिखिली केतोटी प्रोनाउन लिखिली बा एडवर्ब लिखिली ना छोटी एडवर्ब बा छोटी प्रोनाउन मु लिखिली ए छोटी भितर जेकोसी गोटे प्रोनाउन आरंभ रे व्यवहार होइथिबो रिलेटिव क्लॉज रो बा एडजेक्टिव क्लॉज रो ओके माय डियर स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड आम कि जानिबा जेटा रिलेटिव क्लॉज बा एडजेक्टिव क्लॉज बोली ना क्लॉज रो आरंभ रे निश्चित रूपे हु बसी थाई पारे किंबा व्हिच बसी थाई पारे दैट बसी थाई पारे किंबा हुम बसी थाई पारे किंबा हुज बसी थाई पारे किंबा व्हेयर बसी थाई पारे ए छोटी एडवर्ब बा प्रोनाउन भितर जेकोसी गोटे आमर व्यवहार होइथिबो आरंभ रे ताकू आमे जानिबा एटा एडजेक्टिव क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज बोली ओके माय डियर स्टूडेंट्स देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट आमे जेते गुडे देखिले फॉर एग्जांपल आम गोटे एग्जांपल नबा दिस इज द boy who won the first prize. This is the boy who won the first prize. Another example, this is the book that I was looking for. This is the house that John built. The boy who stole your pen has been caught. Where is the boy? Where is the boy whom you punished? Where is the boy whom you punished? Eat all you have. Eat all you have or need. तेणु these are the examples of adjective clause or relative clause. आमे एगुड़िक है गोटे गोटे रिलेटिव क्लोज बा रिलेटिव क्लोज बा एडजेक्टिव क्लोज रो गोटे गोटे उदाहरण. द फर्स्ट वन इज दिस इज द बॉय हु ओन द फर्स्ट प्राइज. दिस इज द हाउस दैट जॉन बिल्ट. द बॉय हु स्टोल योर पेन हैज बीन कॉट. व्हेयर इज द बॉय whom you punished. Eat all that you have or that you have or you need. तेणु आम ये देखा बर्तमान इधर मेन क्लोज किए रिलेटिव क्लोज किए. तेणु द अंडरलाइन पार्ट इज रिलेटिव क्लोज. हु ओन द फर्स्ट प्राइज रिलेटिव क्लोज आर सी रिलेटिव क्लोज and other portion of the sentence is main clause, that is a MC. That is MC main clause.
who won the first prize, who won the first prize, relative clause বা adjective clause, because it qualifies the head word or head noun the boy, କାରଣ ଏ boy को qualify କରୁଅଛି. Then come to the second line, this is the book that I was looking for. ଏଠି that ଜାଗାରେ ଆମେ which ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା. which I was looking for, that I was looking for. ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା relative clause RC. Then this is the book, ଇଏ ହେଲା MC. Then come to the next line, the boy, this is the house, this is the house, MC, main clause, that John built, ये होची RC, relative clause বা adjective clause. Then come to the next line, the boy who stole your pen has been caught. Who stole your pen, who stole your pen, ये हला RC. Then other person that is called the boy has been caught, MC, MC. Where is the boy whom you punished, whom you punished, ये होजे RC. The other person is MC. Eat all, eat all, ये होचे eat all, ये होचे MC. You have or you need, that is MC. RC, RC, RC. तेणु एबे आमे समस्ते ब्लैकबोर्ड भल देखिबा जे एदरो रिलेटिव क्लोज वाक्य आम जो लिखिले 6टी वाक्य आम लिखिछंती. ए 6टी वाक्य भितरे केउ वाक्य केउठी रिलेटिव क्लोज एवं केउठी मेन क्लोज आमे जदि निरीक्षण करिबा भल भार देखिबा ताहले आमे बुझी पारिबा. द फर्स्ट वन इज दिस इज द बॉय, ये होची एमसी बा मेन क्लोज. हु ओन द फर्स्ट प्राइज एवं हु मु कहिछि जे 6टी जो रिलेटिव प्रोनाउन रहिछि बा एडवर्ब रहिछि ता भितरु गोटिए व्यवहार होइथिबो. हु एटे हु होइछि, हु होइछि, दैट, हुम, हुज, होयार. तेनो दिस इज द बॉय हु ओन द फर्स्ट प्राइज. तेनो एटे हु ओन द फर्स्ट प्राइज हला रिलेटिव क्लॉज. व्हिच और दैट आई वाज लुकिंग फॉर, तेनो ये होछि रिलेटिव क्लॉज. दैट जॉन बिल्ट, रिलेटिव क्लॉज. हु स्टोल योर पेन, that is called relative clause. Then whom you punished, that is called relative clause. And you have or you need, that is relative clause. एवं ये प्रकार आमे ताकू आमे जानि परिबा जे गोटे पॉइंट हम प्रथम मन रखा पड़िबो. रिलेटिव क्लोज, द अदर नेम ऑफ इट इज एडजेक्टिव क्लोज. एडजेक्टिव मीन्स ए क्वालिफाइंग वर्ड. तेणु ए क्लोज व्हिच डज द वर्क ऑफ an adjective, that is called adjective clause. Above adjective clause is introduced with the pronouns or the adverbs like who, which, that, whom, whose and where. एवं ए 6टी शब्द भितरु 6टी प्रोनाउन भितरु गोटिए प्रोनाउन रु आरंभ होइथिबो रिलेटिव क्लोज. ताको हम जानिबा रिलेटिव क्लोज बोली जानि कहि परिबा. तेनु कोन कोन से 6टा? who, which, that, whom, whose आड होयार. ए 6टा भितर जेकोसी गोटे शब्द क्लोज आरंभ व्यवहार होइथिबो ताको हम कहिबा रिलेटिव क्लोज. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. आम देखिए द यूज ऑफ प्रोनाउंस, यूज ऑफ प्रोनाउंस. फास्ट देखिए हु, हु रो व्यवहार. हु आम कोड व्यवहार करती. हु इज यूज्ड
for people व्यक्ति अर्थरे लोक अर्थरे आमे हु को व्यवहार करू तेणु हु इज यूज्ड फॉर पीपुल व्यक्ति अर्थरे आमे हु को व्यवहार करू यूज ऑफ प्रोनाउंस जो आमे छोटी प्रोनाउन कथा बा एडवर्ब कथा आमे आलोचना कले जे छोटी भितर जे कोनसी गोटे लेकि रिलेटिव क्लोज आरंभ रे व्यवहार होइथिबो तेणु हु रो व्यवहार हु इज यूज्ड फॉर पीपुल देन व्हिच or that is a are used for all nouns except people which बा that आम सब नाउन पाई व्यवहार करि परिबा किंतु व्यक्ति अर्थरे आम ताको व्यवहार करि परिबा नाही इट इज द फर्स्ट रूल देन दैट यूज ऑफ दैट दैट कोड व्यवहार हुए दैट इज ए यूज्ड फॉर पीपुल ऑल्सो व्यक्ति अर्थरे मध्य दैट को व्यवहार करा जाए दैट इज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री रे वाक्य रे एडजेक्टिव परे दैट व्यवहार हुए देन दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स लाइक एनी एनीथिंग none nothing everything that is a indefinite pronoun that कह जाउछि etc then any anything none nothing everything something anybody somebody ए गुड़िक परे आमे that व्यवहार करि थाओ then that is used for both people for both a man and a thing उभय व्यक्ति पाई वो मनीष द्रव्य पाई आमे दैट व्यवहार करि थाओ देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट व्यवहार गला देन आसिला हुज इज यूज्ड फॉर पीपल and it is used in place of his, her, them etc आमे हिज हर देम स्थल रे आमे हुज व्यवहार करि परिबा देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट whom is used whom is the objective whom is
the objective form of who. It is used in place of him, her, their, etc. Then whom is also used with prepositions. Then where is used in case of place. These are the usage of pronouns. आमे ये जेते छोटी प्रोनाउन कथा हम देखिले बा छोटी एडवर्ब कथा देखिले एगुड़िक व्यवहार केउठी आमे काहाकू केउठी व्यवहार करिबा आमे जानिले जे हु व्यक्ति अर्थ रे हु व्यवहार करा जाए व्हिच दैट सबु नाउन क्षेत्र व्यवहार होबो किंतु व्यक्ति क्षेत्र हे परिबो नाही दैट रो व्यवहार हला उभ दैट लेकि हमर उभ द्रव्य क्षेत्र व्यवहार हो पारिबो व्यक्ति क्षेत्र मध्ये व्यवहार हो पारिबो दैट आ कोड व्यवहार हुए सुपरलेटिव डिग्री रो एडजेक्टिव पद परे व्यवहार हुए एवं दैट एनी एनीथिंग नॉन नथिंग एवरीथिंग एनीबॉडी समबॉडी नोबॉडी तेणु ये जेते आम इंडेफिनिट प्रोनाउन रही परे परे दैट व्यवहार हुए एवं आ गोटे होची उभ व्यक्ति एवं द्रव्य क्षेत्र में दैट को व्यवहार करा जाए एवं हुज रो व्यवहार साधारणतः हुज होची आमर व्यक्ति अर्थ रे हुज व्यवहार हुए एवं कि हिज हर देम ए प्रतिबदल रे हुज को व्यवहार करा जाए हुम इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ हु रो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हला हुम एवं इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हिम हर देयर जोठे हिम हर देयर थिबो ता जगह आमे हुम व्यवहार करिबा एवं हुम को मध्य आमे गोटे प्रिपोजिशन सहित विथ हुम टू हुम आमे मध्य लिखि पारिबा एवं होयार इज यूज्ड इन केस ऑफ प्लेस स्थान विशेष रे होयार को हम व्यवहार करि थाउ दीज आर द यूसेज ऑफ प्रोनाउंस देन ओके माय डियर स्टूडेंट्स देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट then classification of relative clause relative clauses relative clause को हमें विभागीकरण करिबा तेणु relative clause relative clauses is of two types. First one is defining relative clause. Then another is non-defining relative clause. आमे क्लास 10 रो ए लेटर टू गॉड हमर जो फंक्शनल ग्रामर रही से आमे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कथा आमे आलोचना करथिले तेणु से रिलेटिव क्लोज होजी दी प्रकार गोटे होजी डिफाइनिंग आ गोटे होजी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज तेणु जो डिफाइनिंग एवं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आमे देखिबा आम किभली हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेदर इट बिलोंग्स टू डिफाइनिंग क्लोज और नॉन डिफाइनिंग क्लोज तेणु आम किभली जानिबा जे वाक्यटी डिफाइनिंग क्लोज रे अछि नॉन डिफाइनिंग क्लोज रे अछि देन गोटे वाक्य एग्जांपल नबा द मैन दैट मोहन
was talking to is his uncle. This is the boy whose parents were killed in a car accident. तीन नंबर, I met the man I know. Amit who stands fast in the class is very sincere. आमे ए चारोटी वाक्य को आम देखा। ए चारोटी वाक्य आमर दुईटी डिफाइनिंग क्लोज रे लिखा जाइछि एवं आउ दुईटी नॉन डिफाइनिंग क्लोज रे लिखा जाए अछि। तेणु आम देखिबा द मैन दैट मोहन वाज टॉकिंग टू इज हिज अंकल। मोहन जो लोक सहित कथबार्ता करुले से आउ कहीं नुहति तांकर से अंकल, हुए तो मैटरनल अंकल और पेरेंटल अंकल। कि पेरेंटल अंकल कहले कका, मैटरनल अंकल कहले मामू। तेणु द मैन दैट मोहन वाज टॉकिंग टू इज हिज अंकल। तेणु ये आम रिलेटिव क्लोज है दैट मोहन वाज टॉकिंग टू है आर सी। देन द्वितीय वाक्य आसला दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स वर किल्ड आर सी। I met the man I know hela RC. Amit who starts fast in the class RC. तेणु आमे वर्तमान ए चारोटी वाक्यरू मेन क्लोज कौड़ा एवं रिलेटिव क्लोज कौड़ा ताको आमे पॉइंट आउट कले। तेणु जो वाक्यर जो अंशटा को अंडरलाइन कर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस बिलोंग्स टू रिलेटिव क्लोज और क्लोजेस। तेणु जिते अंडरलाइन करा अंश गुड़िक हूँ गोटे गोटे रिलेटिव क्लोज एवं आमर काम बा आमर वर्तमान देखा जे अंडरलाइन पार्ट टी बा अंडरलाइन पार्ट गुड़िक एगुड़ाक डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। तेणु प्रथम देखा द मैन दैट मोहन वाज टॉकिंग टू इज हिज अंकल। द मैन तेणु से जड़े व्यक्ति जन किए जना पड़ू नाही। तेणु से व्यक्ति को दैट मोहन वाज टॉकिंग टू कि आइडेंटिफाई करुअछि। सो इट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज DRC डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। तेणु एठे व्यक्ति केते तो व्यक्ति अछंती किंतु जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति को सूचाई देउछि। जो निर्दिष्ट व्यक्ति सहित मोहन कथबार्ता करुले से आउ कहीं नुहति से तांकर अंकल थिले। तेणु एटे द मैन को दैट मोहन वाज टॉकिंग टू आइडेंटिफाई करुछि। सो इट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। देन दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स वर किल्ड इन ए कार एक्सीडेंट। This is the boy whose parents were killed in a car accident. तेणु ये जो देखा आम ये दिस इज द बॉय जड़े व्यक्ति से पिलाटी किए जार बापा माँ कि कार एक्सीडेंट रे मृत्युवरण करिसंती।
तेणु ये बॉय को आ सूचेबा पड़ूना कारण जना पड़ जाऊँगी जो दुई जन व्यक्ति जो कपुल जोटा कि कार एक्सीडेंट रे मृत्युवरण कले ताहा आउ से पिलाटी आउ कहीं नुहति से तांकर पुओ तेणु एथिपाई बॉय को ये आइडेंटिफाई करूना ये होची नॉन डिफाइनिंग क्लॉज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज देन आई मेट द मैन आई नो दैट इज आरसी तेणु ये आमर हिडन आउट रही दैट रही गोटे दैटा इट इज लेव आउट और हिडन आउट लेफ्ट आउट और हिडन आउट तेणु दैट तेणु यहाँ हूँ डिफाइनिंग DRC अमित हु स्टार्ट्स फास्ट इन द क्लास इज भेरी सिनसीयर तेणु अमित इज भेरी सिनसीयर तेणु अमित आइडेंटिफाइज इट सेल्फ और हिमसेल्फ अमित निजक निजे परिचय कर देपाई हु स्टार्ट्स फास्ट इन द क्लास कहवा किसी जरूर नुहे से सूचई पार ना तेणु यहाँ हूँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तेणु द मैन दैट मोहन वाज टॉकिंग टू इज हिज अंकल दैट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज दिस इज द बॉय whose parents were killed in a car accident whose parents were killed non defining relative clause I met the man that I know that means that I know तेणु ये हूँ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज देन हु स्टैंड्स फास्ट इन द क्लास ये हूँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तेणु ये चारोटी एग्जाम्पल आम कौन बुझिले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज संपर्क में आम कौन पार्थक्य देखिले आम बर्तमान ताकू आम तार पॉइंट को आउट करवा तेणु देखिबा फर्स्ट पॉइंट हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू recognize whether the relative clause belongs to defining or non defining first point in non defining relative clause comma or hyphen is used but not with a defining relative clause हम देखिबा जो वाक्य रे कमा रिलेटिव क्लॉज पूर्वरु एवं रिलेटिव क्लॉज परे कमा व्यवहार होइथिबो किंबा गोटे हाइफेन पूर्वरु गोटे परे गोटे व्यवहार होइथिबो ताको हम कहिबा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किंतु जदि कमा व्यवहार होई नाही ताहले सेटा निश्चित डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होइथिबो देन याला प्रथम पॉइंट सेकंड पॉइंट in defining relative clause that is used in place of who and which but in non-defining relative clause that is not used relative clause रे आमे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज दैट कंजक्शन व्यवहार हुए नाही किंतु डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रे दैट आमे हु जगह रे हुच जगह लिखि परिबा देन कम टू द पॉइंट 3 इन ए डिफाइनिंग
relative clause in defining relative clause we can leave out who, which, that, when it is objective. When it is objective. Point 4. In a non-defining relative clause, we cannot leave out who or which it is. तेणु आमर चारोटी कथा मन रखा पड़ो जे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज ताको आम किभଳି चिन्हिबा तार चिन्हिबार चारोटी पॉइंट बा चारोटी आमर एलिमेंट को मन रखिले निश्चित रूप आम पॉइंट आउट कर पारिबा वेदर द रिलेटिव क्लोज बिलोंग्स टू डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. देन फर्स्ट वन इज इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कॉमा और हाइफेन. कॉमा और हाइफेन गोटे कॉमा पूर्वर पूर्वर गोटे कॉमा बसी थाई पारे किंबा जोटा कि पूर्वर एवं पर गोटे गोटे हाइफेन बसी थाई पारे किंतु जोटा कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज रे ताहा व्यवहार होई न थाए. द्वितीय कहीगला जे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज रे दैट प्रोनाउन टा व्यवहार हबो का जगह रे हु जगह रे व्यवहार करि पारिबा हुज जगह रे व्यवहार करि पारिबा किंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज रे दैट कंजक्शन व्यवहार दैट प्रोनाउन व्यवहार हुए ना बा दैट एडवर्ब व्यवहार हुए ना. इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज वी कैन लीव आउट हु व्हिच दैट. आमे रिलेटिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज रु आमे दैट को उठै दे परिबा व्हिच को किंबा हु को उठै दे परिबा जेते बेले यह ऑब्जेक्ट होइथिबो. देन इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज वी कैन नॉट लीव आउट हु व्हिच. आमे डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज रु हु किंबा व्हिच प्रोनाउन को आमे उठाई पारिबा नाही. जे भली गोटे एग्जांपल अब लिखिथिले इट ऑल दैट यू नीड और दैट यू हैव. तेणु ये दैट लिखि लिव आउट अच्छी और लेफ्ट आउट अच्छी और हिडन आउट अच्छी. तेणु एटा ऑल पर आमे दैट व्यवहार करि पारिबा किंतु एटा कि यह हबो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. तेणु ये चारोटी पॉइंट जदि आम मन रखिपर ताहले निश्चित रूपे आम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कथा आम संपूर्ण बुझीपर. तेणु ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यदि कौन या बुझीबार कौन असुविधा हुए बा बुझीपारे नाहांती ताहले आमर परवर्ती समय आमर ए नंबर को व्हाट्सएप जरिया जणाइले तार समाधान करा जाय पारिबो. समस्त को धन्यवाद दे आज कालांश को एतिकरे समापन करूछि. धन्यवाद.